Hello everyone, good morning. Welcome to Delta Tutorials. I am Majid Hussain, BTech in Mechanical Engineering and ex-GL at Government Polytechnic Gaya. I am here to teach you physics for NEET, JEE Mains and Board. सब्जेक्ट मैटर पे आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी इस फेज में आ गए हो कि आप नेशनल लेवल पे compete करने जा रहे हो। So there should be a proper strategy in your whole preparation. And the important thing is that the syllabus is so vast as compared to the earlier classes that you were in. Important tips जो preparation में करना है वो है, the first one is aim. You should set a aim which should be the highest, like to be a best doctor, to be a best engineer, so that it helps you in self motivation. एक्सटर्नल मोटिवेशन से बेहतर होता है सेल्फ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप 2-3 दिन तक मोटिवेट रहेंगे, कुछ दिनों के लिए आप सही से पढ़ पाएंगे, फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है तो आप लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं। सो देयर शुड बी इंटरनल मोटिवेशन। द सेकंड वन इज डेडिकेशन। You should be dedicated throughout your journey of preparation. The third one is consistent. You should be consistent. इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 5-6 घंटा पढ़ लिए, 2-3 दिन गैप कर दिए। इससे क्या हो जाएगा, आप डीमोटिवेट फील करेंगे। द फोर्थ वन इज प्रैक्टिस। दिस इज important thing. After the completion of topics or a chapter, you should practice a large number of questions. इससे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का स्किल्स डेवलप होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटेंट्स को, कंसेप्ट्स को ग्रैप्स कर पाएंगे। And the fourth one is revision. The most important things. जैसा कि मैंने कहा कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्टूडेंट ये करते हैं कि फर्दर पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी प्रॉपर रिविजन स्ट्रेटेजी. The technique that I will discuss is I111. I111. I is immediate. I is for immediate. Next one is after 1 day. This one is after 1 week. And the last one is after 1 month. If you revise like this, then you will have the tendency to grasp the things for longer duration of time. So revise like this. अच्छा, अब ये आप ये बताएं कि किन लोगों को फिजिक्स टफ लगता है, कमेंट इट। सच कहूँ, फिजिक्स मुझे भी टफ लगता था बिफोर 11th, लेकिन जब मैं कोटा गया तो आई वॉज फॉर्चुनेट दैट मुझे
कोटा के टॉप बेस्ट फैकल्टी मिले जिनसे मैंने फिज़िक्स पढ़ी है। उन्होंने फिज़िक्स को इतना सिंपल और इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बना दिया कि टेस्ट में फिज़िक्स के क्वेश्चंस को ढूंढ कर करता था और मैक्सिमम मार्क्स फिज़िक्स में ही आते थे। जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों में अच्छे मार्क्स आए। सो आई विल टीच द फिज़िक्स इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। इसके लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। अच्छा ये बताएं कि फिज़िक्स क्या होता है। जो भी फेनोमेना जो नेचर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री, रोटेशन और एंड रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ओके, एक्सेट्रा। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस 4 टाइप्स से बनते हैं। द फर्स्ट वन इज, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, उसका डायमेंशंस पूछेगा। द सेकंड टाइप, इन अ गिवन इक्वेशन देयर विल बी फिजिकल कांस्टेंट, और उस फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशनल यूनिट लिखना है, बताना है। द थर्ड वन इज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। फोर्थ टाइप, वन यूनिट टू अदर यूनिट में कन्वर्जन करना होगा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का। ये भी आइडिया दे दिए हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट्स क्या क्या देखेंगे, देख लीजिए एक बार। यूनिट्स, what are units, what are physical quantities, fundamental quantities, derived physical quantities, dimensional formula and dimensions, applications, limitations. So now let's see one by one. Now in units we will see FPS, the second type is CGS, the third one is MKS, the fourth one is the last one is SI. In each, the first term is representing the unit for length. The second one representing mass, and the third one representing time. This will be here the unit for length is foot, pound, in FPS the unit for length is foot, mass is pound, and time is second. In CGS the unit for length is centimeter, mass is gram, and time is second. In MKS system the unit for length is meter, mass is kg, and time is second. In SI system we will see later, like mass length is in meter, mass is in kg, time is in second, current in ampere, temperature in theta, like that, amount of substance and luminous intensity. This is units. Now
The second thing that we will see here is physical quantity. What are physical quantities? The quantities that can be measured directly or indirectly, उसे physical quantity बोलते हैं. For example, mass, length, time, these are physical quantities. Now, see fundamental quantities. Now, see fundamental quantities. What are they? These quantities are set of, or we can say, these quantities are independent of each other. They are 7 in numbers. फंडामेंटल क्वांटिटीज का नंबर 7 है, 7 in numbers. What are they? Here I am writing fundamental quantities, its SI unit and their notations. The first one is mass. The second one is length. The third one is time. The fourth one is temperature. The fifth one is electric current. The sixth one is luminous intensity. And the last one is amount of substance. Now, see their SI units. Mass का SI unit kg. Now, these are the fundamental units, fundamental quantities. The SI unit for mass is kg and its notation is mass, m. मास को डिनोट करेंगे m से, अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तब. लेंथ का SI यूनिट मीटर, लेंथ को डिनोट करेंगे L से. टाइम का SI यूनिट सेकेंड, इसे डिनोट करेंगे T से. टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, इसे डिनोट करेंगे थीटा से. इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट एम्पेयर, डिनोटेड बाय एम्पेयर A और I. Luminous intensity, its SI unit is candela, notation is CD. Amount of substance, its SI unit is mole and its notation by MOL. Now we are in a condition to write the dimensional formula of given physical quantities. No, before writing dimensional formula of physical quantities, look what are supplementary physical quantities. These are plane angles, its unit is in radian, and the second one is solid angle, its unit is in steradian. Plane angle का unit radian and solid angle का unit steradian. And later you will see that these are dimensionless. आगे बताएंगे कि dimensionless क्या होता है, dimensional formula क्या होता है. So now
Let's write the dimensional formula. Now, what are derived physical quantities? Such quantities which are expressed in the terms of fundamental physical quantities. Example, speed, acceleration, momentum, work, or take example, force. What is the formula of speed? Distance by time. This is derived physical quantities because here distance and time are fundamental physical quantities. Distance, its SI unit is meter. Time, SI unit is second. So, if we have to write the dimensional formula for speed, then we have to write the notation for length and time. Now, what was the notation for mass? Mass m, length L, time T, temperature theta. These four fundamental physical quantities will be used in most of the case. So, speed is distance by time. Distance, it is the length, and length is denoted by L. डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम. टाइम का नोटेशन क्या है? टी, एल बाई टी. टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एल टी माइनस वन. एल टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड. Okay, now we have to write the dimensional formula for acceleration. What is acceleration? Change in velocity by change in time. Velocity का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वही जो स्पीड का है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी. देन इट विल बिकम एल टी माइनस टू. So L t minus 2 is the dimensional formula for acceleration. Now we have to write the dimensional formula for momentum. What is the formula for momentum? Mass into velocity. M is denoted by, sorry, here M is, what is M? M is mass. Mass is denoted by capital M. And velocity, velocity का dimensional formula क्या है? Speed का L t minus 1. L t minus 1. So, m L t minus 1 is the dimensional formula for momentum. If we have to write the dimensional formula for force, then what is force? Force is defined as mass into acceleration. Here mass is denoted by m, and acceleration, we have derived the dimensional formula for acceleration, which is L t minus 2. So, m L t minus 2 is the dimensional formula for force. So, if we have to write the dimensional formula of any physical quantities, we must know the basic formula only of that physical quantities. Like speed, we must know that speed is distance by time. Acceleration, change in velocity upon change in time. Momentum, mass into velocity. Force, mass into acceleration. If we know the formula, then we can write the dimensional formula of any physical quantities. So, now let us write the dimensional formula of more number of physical quantities. Now, we have to write the dimensional formula of given physical quantities. Before writing the dimensional formula, we must know the formula. Like work, what is work? Force into displacement.
force into distance. Now frequency, what is frequency? 1 by T, where T is time period. Pressure, force by area. Power, work done by time taken. Torque, R cross F, where R is perpendicular distance, F is force. Density, mass by volume. So now we are writing the dimensional formula. Earlier we have derived the dimensional formula for force. What was that? mLt minus 2. Again I am finding that the dimensional formula for force. What is force? Mass into acceleration. Mass is denoted by capital M, and acceleration, what was that? Lt minus 2. So the dimensional formula for force mLt minus 2. So now write here mLt minus 2 into distance. Now we have to add the power of same base. Here the base is L, here the base is L. Power is here 1, 1. So when we add the power of L, then it will become mL square T minus 2. So the mL square T minus 2 is the dimensional formula for work. What is the dimensional formula of volume? Volume, what is volume? Length का cube और side का cube, and length is denoted by L. So L cube is the dimensional formula for volume. फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? T इनवर्स. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? mLt माइनस 2 अपॉन एरिया का क्या है? L स्क्वायर. तो ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? mL माइनस 1 T की पावर माइनस 2. पावर, पावर व्हाट इज पावर? वर्क अपॉन टाइम. वर्क का क्या आया डायमेंशनल फार्मूला? mL स्क्वायर T माइनस 2. mL स्क्वायर T माइनस 2 divided by time. T will go up, it will become mL square T minus 3. Torque, R is what? Perpendicular distance, means length. Length को डिनोट करते हैं L से, एंड फोर्स को डिनोट करते हैं. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? mLt minus 2. What will become? mL square T minus 2. Density, what? Density defined as mass by volume. Mass is denoted by capital M and volume is denoted by L cube. So the dimensional formula for density will be mL की power minus 3. Now angle. Suppose this is a circle, this is center, this is radius, this is arc. Suppose the length of the arc is L. Angle subtended is theta. What is theta? Theta is defined as L by R. L by R. L is the length, R is also a length. So the dimensional formula for length is L, and R, which is the length, is L, means L0. It implies that angle is a dimensionless quantities. It can be also written as m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर डायमेंशनलेस टर्म है तो m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 लिख सकते हैं. स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ divided by original length. Strain is of various types like lateral strain, longitudinal strain, volumetric strain, which you will study later. Here I am writing longitudinal strain. Change in length divided by length. Change in length L और लेंथ को डिनोट करेंगे L से. तो ये भी क्या है? डायमेंशनलेस टर्म. m0, L0, T0.
Stress. What is stress? Internal resisting force per unit area. Means in numerator it is force. What is the dimensional formula of force? M L T minus 2. डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया. इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर. देन इट विल बिकम एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस. Impulse. What is impulse? Impulse is defined as force into time. When force acts for short duration of time, it becomes impulse. So, the dimensional formula of force is mLt minus 2, mLt minus 2 and time t. Then it will become mL square t minus 2. Angular velocity, which is denoted by omega, and it is defined as linear velocity upon radius. Suppose a particle is rotating in a circle whose radius is r, here C is the center, V is a particle is rotating in a circle of radius r with linear velocity v. Then angular velocity is defined as linear velocity upon radius. Velocity का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं. क्या है? एल टी माइनस 1. देख लेते हैं फिर. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली having the same unit of distance and denoted by L. Time is denoted by t. When t goes up, then it will become Lt minus 1. So, the velocity का dimensional formula Lt minus 1, radius का L. ये हो गया क्या? t minus 1. This is angular velocity. Now, we have written the dimensional formula of various physical quantities. Now, next is dimensions. What are dimensions? Dimension is defined as power of fundamental physical quantities. Here fundamental physical quantities is L. L का पावर कितना है? 3. तब हम लोग बोलेंगे कि dimension of L in volume is 3. यहाँ पे लिख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी में ये जो ml की पावर माइनस 3 आया डायमेंशनल फार्मूला, इसमें अगर पूछे कोई कि ये बताओ dimensions of m in density is 1 and dimensions of L is minus 3. Here dimension of m is 1, dimension of L is 2, dimension of t is minus 2. Look here, what is the dimension of t in angular velocity? It is minus 1. जो भी पावर है वही डायमेंशन होगा. ठीक है. We have discussed units, physical quantities, fundamental physical quantities, supplementary quantities, derived physical quantities, dimensional formula and dimensions. In next class, we will see its application parts, which I have discussed in the beginning of the class, and its limitation. So, thank you for watching. Like, share and subscribe the channel. Thank you.